Good morning, everyone. Till now, we have done 10 questions of exercise 5.2, where we are using the formula an is equal to a plus n minus 1 into d to calculate the nth term of the AP. Or we can use this formula if we have to find out number of terms, that how many terms are there, right? Or we have to find out the first term, or we have to find out the common difference, right? So this is the main formula which we are going to use in this complete exercise, right? Till now we have done 11 questions of this exercise, and today we are going to continue with question number 12. Your 12th question is, two APs have same common difference. The difference between their 100th term is 100, and we have to find out the difference between their 1000th term. Two APs are there, and these APs have their common difference same. So I am considering the AP to be A plus D, A plus 2D, dash, 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 right? My first term is A. I have taken the common difference B. And second AP I am considering B, B plus C, B plus 2D, up to so on. Here also I have to consider different AP. Common difference is to be considered same. So my common difference is D now. So AP, B plus D, and so on, right? Now, they are saying the difference between their 100th term. Its 100th term will be A100. Its 100th term will be B100. Difference between their 100th term is 100. Difference means we have to put minus. Now, for A100, I am going to apply the formula. This will be A plus 99D minus. It will be B plus 99D. Because of this negative sign, I have put the terms in the bracket. Now I will open it. A plus 99D minus B plus minus minus 99D. This is given to be equal to 100. Now 99D and 99D, positive, negative, they will get cancelled, and we will be left with A minus B is equal to 100. This is what we can solve this equation up to here only. And now we are coming again on the question. In the question, we have to find out the difference between their 1000th term. So 1000th term difference means I have to find out A1000 minus B1000. Now A1000 is A plus 999D minus B. Because of this negative sign, अंदर वाले sign change हो जाएंगे. So I am writing it without the brackets. B minus 999D. Here 999D and 999D, they will get cancelled, and we will have A minus B only. But from this equation, we have A minus B is equal to 100. तो ये आपकी A minus B की वैल्यू आ जाएगी 100, right? और ये वैल्यू 100 A minus B की नहीं आई है. This value is of A1000 minus B1000. That means if you have two APs जिनका कॉमन डिफरेंस आपका सेम चल रहा है, उनके अंदर जो भी आपका फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा वही आपका डिफरेंस हमेशा कंटिन्यू रहेगा, चाहे वो आपका 1000 टर्म का डिफरेंस हो, चाहे 500 टर्म का डिफरेंस हो, चाहे वो 100 टर्म का डिफरेंस हो. इसको हम किस तरह से एग्जांपल से कर सकते हैं? I am considering two different APs here. Let my two APs are of even numbers and of odd numbers. My AP is 1, 3, 5, 7, dash, dash, dash. And second AP I am taking of even numbers 2, 4, 6, 8, dash, dash, dash. ये दो APs हैं. Here also the common difference is 2. In this AP also the common difference is 2. ठीक है, दोनों का common difference same है, दो अलग अलग AP हैं. Now what is the difference between their first term? First term का difference 1, second term का difference 1, fourth term का difference 1. Similarly, the difference between their 100 term will be 1, 1000 term will be 1, 10,000 term will be 1, right? So अगर आपके पास दो APs ऐसी हैं जो स्टार्ट तो चाहे जहां से भी हो रही हो, बट अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस सेम रहेगा, एंड दैट डिफरेंस विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर फर्स्ट term, right? Now coming on question number 13. From 13th question, we have to find out that how many 3-digit numbers are divisible by
7. 3-digit numbers are divisible by 7. First of all, we have to write down the numbers which are divisible by 7, and they must be 3-digit numbers. My first 3-digit number is 100. If I divide it by 7, will it be divisible? No, it will not be divisible. So first of all, you have to find out the first 3-digit number which is divisible by 7. If you consider 101, ये भी 7 से divisible नहीं होगा. 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा. The first 3-digit number divisible by 7 will be 105. ठीक है. 105 से अगला नंबर जो 7 से divisible होगा means you just have to add 7, क्योंकि आप 7 की टेबल भी अगर लिखते हो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, उसमें भी आप 7 प्लस करके लिखते जाते हो, right? So here also we are going to add 7 to 105. We will get 112. 112 plus 7 will be 119. And now I have to find out the last 3-digit number which is divisible by 7. Last 3-digit number जो आपका 7 से divisible होगा, आपका लास्ट 3-digit नंबर सबसे बड़ा नंबर 7 से डिविजिबल होता है 999, बट 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. उससे पहले वाले नंबर पे आ जाइए. 999 से छोटा 998, 997. यू हैव टू चेक वेदर दे आर डिविजिबल बाय 7 और नॉट. Last 3-digit number which we will get divisible by 7 is 994, or you can divide 999 with 7. जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर बचेगा 5. दैट मींस इस नंबर के अंदर 5 आपका एक्स्ट्रा है. अगर वो 5 यहाँ से हट जाए तो आपका नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा. सो वी हैव सब्ट्रैक्टेड 5 फ्रॉम 999. वी विल गेट 994. सो द लास्ट 3-digit नंबर डिविजिबल by 7 is 994. Now we have to find out that how many numbers are these. कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं. Let n नंबर हैं, right? So we have to find out the value of n, right? n आप find out करेंगे. इसमें आपका a first term हो गया 105. What is d? Second term minus first term, or we are saying कि हम 7 plus करके लिखने जा रहे हैं. So your d will be 7, right? We are also given the last term. We are saying कि इसके अंदर n terms हैं, तो ये इसकी nth term हो गई. That means an is equal to 994. Now I apply the formula for an. A plus n minus 1 multiply d is equal to 994. Put the values of a and d. A is 105 plus n minus 1 multiply d is 7. This is equal to 994. Shift कर दीजिए. 105 को आप इधर ले जाओ. You will get n minus 1 multiply 7 is equal to 994 minus 105. So you will get n minus 1. 7 को भी आप इधर ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा. माइनस करेंगे तो आपके पास रह गया 9, 8 and this is 9 minus 1, 8. ठीक है. And now you are going to cancel it. 127. So you will get in. This 1 will be shifted on the other side. 127 plus 1, that is 128. So there are total 128 terms in this AP, right? So we can say that total 128 numbers are there which are divisible by 7 or which are multiples of 7, right? Similar is the next question. उसमें आपके पास 4 के मल्टीपल्स की बात हो रही है. And now they are not saying कि 3-digit या 2-digit होना चाहिए. They are saying the number should lie between 10 and 250. जो नंबर्स हैं वो आपके 10 और 250 के बीच में लाई करने चाहिए. 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए. We have to find out how many such numbers are there. ठीक है. तो 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए, इसके बीच में होने चाहिए. बेटा बीच में होने का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर को इंक्लूड नहीं करना. अगर मैं कहती हूँ कि वो नंबर मेरे 8 और 200 के बीच में होने चाहिए, तो बीच में लाने के लिए मैं अपनी एपी को 8 से स्टार्ट नहीं करूंगी. आई विल हैव टू स्टार्ट माय एपी विद 12. 8 plus 4, 12. 8 will not be included. Similarly 200 will also not be included. आपको 200 से
छोटा नंबर लेना पड़ेगा, राइट। सो एट प्रेजेंट आपके पास 10 और 250 के बीच में आपने नंबर्स लिखने हैं एंड द नंबर्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 4। तो 10 से अगला 4 का मल्टीपल हो गया आपके पास 12, उससे अगला हो गया 16, नेक्स्ट इज 20 एंड द लास्ट वन विल बी 250 से पहला नंबर 250 से छोटा जो आपका नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट 248, ठीक है। Again, we have to apply the same formula to get the value of n because we have to find out how many numbers are these. How many numbers means आपने फिर से n की value find out करनी है. Now you have first term 12, common difference d 16 minus 12 4, ठीक है. an आपके पास हो गई, the last term is 248, right? Now apply the formula again. A plus n minus 1 multiply d. This is equal to 248. A is 12 plus n minus 1. N की तो value find out करनी है. So we are not going to write anything at the place of n. D is 4. This is equal to 248. अब इसको simplify कर लीजिए. Is equal to 244 you will get. Oh sorry, 248 minus 12 और नेक्स्ट आपका हो गया n minus 1 is equal to 248 minus 12 is 236 and this 4 will come here, right? इसको कैंसिल कर दीजिए and this 1 will go on the other side, so you will get n is equal to 59 plus 1, that is 60. So there are total 60 terms in this AP which are multiples of 4, 16 numbers between 10 and 250 which are multiple of 4, right? So this was our question number 14. Now we are coming on 15th question. Your 15th question is for what value of n the nth term of two APs will be equal. You are given two APs. This is your question number 15. First AP is 63, 65, 67, dash, dash, dash. And the second AP is 3, 10, 17, dash, dash, dash. We have to tell that for what value of n की किस value के लिए इसकी nth term और इसकी nth term same हो जाएगी, right? Means if I say कि इसकी 99th term है तो इसकी भी 99th term होनी चाहिए और दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए. दिस इज द कंडीशन, राइट? अगर मैं कह रही हूँ कि 50th टर्म है तो इसकी भी 50th टर्म, इसकी भी 50th टर्म लेनी है और दोनों ही बिल्कुल सेम होनी चाहिए. आई हैव टू दैट वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच nth टर्म ऑफ दिस AP will be equal to nth term of this AP, right? So इसकी भी nth टर्म निकाल लेते हैं, इसकी भी nth टर्म निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं. We are finding out its nth term. An is equal to a plus n minus 1 multiply d. In this question, in this AP, your a is 63 plus n minus 1 and d is 65 minus 63, that is 2. थोड़ा सा simplify कर लीजिए. Open the bracket. 2n minus 2. Now 63 minus 2 is 61 plus 2n. ठीक है, इसको इतना ही simplify कर सकते थे, हमने कर लिया. Now we are coming on the other AP. इसकी nth टर्म आपकी हो जाएगी 3 plus n minus 1 multiply d. d is second term minus first term, means 10 minus 3, that is 7, right? So we will have 3 plus multiply कर दीजिए 7n minus 7, right? Simplify 7n. 3 minus 7 will be minus 4, so it will be 7n minus 4. Its nth term is 61 plus 2n. Its nth term is 7n minus 4. Now they are saying ये जो दोनों terms हैं ये same हैं, तो दोनों को equal put कर देते हैं. According to question, you will get 61 plus 2n is equal to 7n minus 4, right? Simplify करो. 61 plus 4 is equal to 7n. 2n को आप उधर शिफ्ट कीजिए. 7n minus 2n. So you will get 65 is equal to
5n, right? What you will get the value of n from here? 65 upon 5, that is 13. So 13 is the value of n. That means 13th term of this AP will be equal to 13th term of this AP. They are not asking for the value. You just have to tell which term. So which term? We are saying 13th term of this AP will be equal to 13th term of this AP. Clear? Okay. Let me start the next question. This was question number 15, and now we are coming on 16th question. Your 16th question is we have to determine the AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12. फटाफट से इक्वेशन लिख लीजिए आप. You have third term to be equal to 16. जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखते जाते हैं. You will keep on getting the solution. You will reach at the solution yourself. Third term is 16. Seventh term exceeds the fifth term by 12. Seventh term fifth term से exceed कर रही है, ज्यादा है. कितनी ज्यादा है? 12 ज्यादा है. Seventh term ज्यादा means their difference is 12. So seventh term exceeds the fifth term by 12, right? हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशंस आ जाएंगे. We have to simplify those two equations to get the value of A and D, just like we were doing in previous class, right? A और D की वैल्यू आपके पास आते ही you can determine the AP. Clear? So A3 can be written as A plus 2D. This is equal to 16. Here A7 is A plus 6D. माइनस साइन है तो अंदर वाला मैं चेंज करके लिख रही हूँ. minus 4D is equal to 12. A5 is equal to A plus 4D. So minus A5 is equal to minus A minus 4D. आपका A से A cancel हुआ and you will get 6D minus 4D, that is 2D is equal to 12. That means D is equal to 12 upon 2, that is 6. Right? Now you have to put this value of D in this equation to get the value of A. A plus 2 multiply 6 is equal to 16, and you will get 16 minus 12, and 16 minus 12 is 4. So first term we are getting 4, common difference is 6. So our AP will be first term 4, A में D plus कर दो, you will get the second term. 4 plus 6 is 10. 10 में फिर से आप 6 ऐड कर दीजिए to get the third term. You will get 16 and so on. So this will be our answer, that this is the AP. इसमें आपको third term given थी. Third term means A plus 2D 16 given. हमने इसको यहीं छोड़ दिया. Then we are given 7th term exceeds the 5th term by 12. That means the difference between the 7th and the 5th term is 12. Means A7 minus A5 is 12. A7 we are writing as A plus 6D by using this formula. A5 we are writing as A plus 4D, but because of this negative sign, both the terms will become negative. This is equal to 12. A and A will get cancelled and you will get 6D minus 4D, that is 2D is equal to 12. From here you will get D is equal to 6. जैसे ही आपकी D की वैल्यू आ गई, आपने इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया. You will get A plus 2 multiply D is 6 is equal to 16. Now 2 6 are 12 और 12 को आपने दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो वो हो गया नेगेटिव. 16 minus 12, that is 4. So our first term is 4. 4 we have to write the AP. Second term will be A plus D, means 4 plus 6 10. उससे next term 10 plus फिर से आप 6 ऐड कर देंगे, you will get 16. Next term of the AP. So this way you are getting the AP which satisfies the given conditions. Clear? Now coming on question number 17, we have to find out the 20th term from the end, from the last. आपके पास एक AP given है and the AP is 3, 8, 13, dash, 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 253. We have to find out the 20th term from the end. पीछे से 20th करनी है. आगे से बोलते तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देते an is equal to a plus n minus 1 multiply d. बट पीछे से कह रहे हैं तो एक तरीका आपका सीधा सीधा ये है कि आप अपनी AP को ही उल्टा कर दो. ठीक है, ये टर्म आपकी आगे आ गई, ये सारी पीछे चली गई, तो ऑटोमेटिकली अगर आपको पीछे से पूछ रहे थे तो आप आगे से बता दोगे, राइट? या फिर हम अपने फॉर्मूले को ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं.
देखो आपके पास होता है a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन टर्म। बट अगर हम कह रहे हैं कि हम अपनी एपी को उल्टा कर रहे हैं, तो जो लास्ट टर्म थी वो हमारी फर्स्ट टर्म बन गई, दैट मीन्स a की जगह आ गया l, ठीक है। एन माइनस वन आपका एज इट इज है, राइट। अब बात करते हैं d की। d आपका, जब आपके पास ये एपी है तो आपके पास है d 8 माइनस थ्री, ठीक है। 8 माइनस थ्री इज 5। बट अगर मैं इस एपी को उल्टा कर देती हूँ, मैं 253 डैश 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 13 8 3, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म में से पिछले वाली टर्म माइनस करते हैं, तो 3 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -5, ठीक है। जैसे ही आप एपी को उल्टा करते हो, आपका डी का साइन चेंज हो जाता है। दैट मीन्स जहां आपका डी था पॉजिटिव था, अब वो क्या हो गया, नेगेटिव डी। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाता है L minus n minus 1 multiplied d if you have to find out the nth term from the end, right? So we have to find out the 20th term from end. This will be equal to L minus n minus 1 multiply d, right? Where L is the last term. Now last term is 253 minus, you have to find out the 20th term, so your n is 20 minus 1 and the value of d is, कितनी वैल्यू है, 8 minus 3 5, तो यहाँ पे आप पुट करोगे 5, -5 नहीं करेंगे क्योंकि माइनस हमने ऑलरेडी फॉर्मूला में एडजस्ट कर दिया, राइट। नाउ दिस विल बी 253 minus 19 multiply 5, ठीक है। so you will get 253 minus 95 and the answer will come out to be 158, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, आंसर विल बी 158। so your 20th term from the end is 120 158, ठीक है। okay, चलिए, this is the way to find out the nth term from the end. Now let me do one more question. Question number 18. Your 18th question is the sum of 4th and the 8th term of the AP is 24. 4th term and 8th term is 24. जो जो आपको क्वेश्चन में बोलते जाते हैं, आपने उसको अपने इक्वेशंस में कन्वर्ट करते जाना है, ठीक है। स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 4th term means A4, 8th term is A8, their sum is 24, right? इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A4 will be A plus 3D and A8 will be A plus 7D. This is equal to 24, right? Now A plus A is 2A, अब कैंसिल नहीं होगा, नेगेटिव नहीं है, all are positive. 3 plus 7 is 10D. This is equal to 24. सब में से आपका 2 कॉमन निकल जाएगा, सो सारी टर्म्स को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। यू विल गेट A plus 5D is equal to 12. I have divided all the terms with 2. This is my first equation. अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पर। Then they are saying the sum of 6th and the 10th term is 44. Sum of 6th term and 10th term is 44, ठीक है। 6th term को आप क्या लिख सकते हैं, A plus 5D plus, and 10th term is A plus 9D. This is equal to 44. Now A plus A फिर से आपका हो गया 2A plus 9 plus 5 is 14D. That is 44. Again all the terms are divisible by 2, so सबको 2 से divide कर दीजिए। You will get A plus 7D is equal to 22. This is equation number 2. Now our task is to simplify these two equations just like we have done in our previous class. So minus करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को मैं माइनस कर रही हूँ। आपका A से तो A कैंसिल हो जाएगा, A minus A कैंसिल, 7D minus 5D will be 2D, 22 minus 12 will be 10. So you will get D is equal to 10 upon 2, that is 5, right? अब D की वैल्यू तो आ गई, we will have to find out the value of A. A की वैल्यू या तो आप D की वैल्यू को इसमें पुट कर दो या
इसमें पुट कर दो, इट्स योर चॉइस. You will get A. I am putting this over here in first equation. 5 multiply 5 is equal to 12, right? So this will be A plus 25 is equal to 12. That means A is equal to 12 minus 25, and 12 minus 25 is minus 13. ये तो आई है आपके पास first term, but we have to find out first 3 terms of the AP. तो फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए आपके फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म में आप क्या करोगे, डी को प्लस कर दोगे, ए प्लस डी, और उससे नेक्स्ट टर्म में आप फिर से डी प्लस कर दोगे, यू विल गेट द थर्ड टर्म. सो इट विल बी माइनस 13 प्लस डी कितना आया था आपका 5, तो आपने इसमें 5 ऐड करना है. यू विल गेट माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8. ठीक है, और इससे आगे थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए माइनस 8 में फिर से आपने 5 प्लस कर दिया, यू विल गेट माइनस 3. ठीक है, सो योर आंसर इज, आपने 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी. योर 3 टर्म्स आर माइनस 13 एंड माइनस 8 एंड माइनस 3, राइट? दिस इज द आंसर. आपको जो भी गिवन है कंडीशन, उसको आपने इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. एक कंडीशन आपके पास ये थी, इससे एक इक्वेशन आ गई. इन दोनों इक्वेशंस को आपने एलिमिनेशन से ए को एलिमिनेट किया. यू आर गेटिंग d is equal to 5. Then put this value of d in any of the two equation, you will get the value of a. a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई. We have to write first 3 terms. First 3 terms, a is minus 13, first term. Minus 13 में आपने 5 प्लस किया, you will get the next term minus 8, and minus 8 में आपने फिर से d प्लस किया, 5 प्लस किया, you will get minus 3. So this way you are getting the 3 terms of the AP to be minus 13, minus 8 and minus 3, right? Chaliye, switch to the next question. Your 19th question is, Subha Rao started work in 1995 and at an annual salary of rupees 5,000. Subha Rao has started the job with annual income rupees 5,000, annual salary of rupees 5,000, and received an increment of rupees 200 each year. Every year she is getting the increment of rupees 200. We have to find out in which year his income reached 7,000. Subha Rao is a person, man. Okay, so we have to make an AP. The job was started with rupees 5,000 and annual increment was rupees 200. So the next annual salary was 5,200, right? And again for the next year 200 again added, so 5,400. And at the last they are saying the salary reached 7,000. We have to find out in which year the salary reached rupees 7,000. So this way we are getting an AP. In this AP you have A is equal to 5,000, you have D is equal to 200 rupees because 200 rupees increment is there every year, right? And you are given 7,000 means A, and you are given 7,000. अब A भी है, D भी है, A and B है. What do we have to find out? We have to find out the value of N. कितने साल बाद, right? So we are applying the same formula. A plus N minus 1 multiply D is AN. Let me put all the values here. You will get 7,000 is equal to 5,000 plus N minus 1 multiply 200, right? इसको इधर शिफ्ट करो, 7,000 minus 5,000, you will get 2,000. This is equal to N minus 1 multiply 200. 200 को आप इधर शिफ्ट कर दो. 2,000 divided by 200 is equal to N minus 1. आपने इसको कैंसिल किया, you will get N minus 1 is equal to 10. That means N is equal to 11. So after 11 years, the salary will be reached at rupees 7,000. In which year now they are asking? Which year? आपकी शुरू हुई थी 1995 से और आपके पास 11 years further हो गए, तो इसमें आप क्या करेंगे, 11 प्लस कर देंगे. 1995 plus 11 you will get 2006.
So in 2006, his salary, his income reached ₹7,000, right? आपने एपी अपनी तरफ से बनानी है, एपी बनाकर आपने एन की वैल्यू फाइंड आउट की है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करके आपने ईयर फाइंड आउट किया है कि किस ईयर में उसकी सैलरी जो है वो आपकी इतनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी, राइट? सो दिस last question is left. Let we finish the class with the last question also. 20th question. Question is Ramkali saved ₹5 in first week of a year and then increase her weekly saving by 1.75. 5 rupees उसने पहले सेव किए हैं, उसके बाद हर वीक वो अपनी सेविंग को 1.75 रुपीज से इंक्रीज कर रही है. दैट मीन्स इसकी नेक्स्ट हो जाएगी 6.75. 5 plus 1.75 will be 6.75 and so on. And you have to tell if the nth week, if in the nth week her weekly saving become 20.75, उसकी nth week में ये saving 20.75 पहुंच गई है. We have to find out the value of n, right? ये आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल. जब आपके पास एपी आ चुकी है, you just have to find out the value of n, just like we have done in previous question. So here you will get a is equal to 5, d 1.75 से increase हो रहा है, and an is 20.75. So you are going to apply the formula a plus n minus 1 into d, that is equal to 20.75. You have to put the value of a and d and solve the question. Finally you will get the value of n to be equal to 10. ठीक है, ये क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई खुद करेंगे, राइट? सो n की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, राइट? सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 5.2. in our next class we will continue, we will start exercise 5.3. if you face any problem, you have to send me your queries so that I can take your queries. I can give you the solution in your next class. Till then, thank you and have a nice day.